हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोड गेम यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश। और आज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फुल फ्लेज मोबाइल डेवलपमेंट सीरीज जो कि फ्लटर से होने वाली है। तो बिफोर लाइक गोइंग इनटू फ्लटर, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोबाइल डेवलपमेंट। सो मोबाइल डेवलपमेंट इज अ फील्ड जहां पे वी आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशंस फॉर ऑल द मोबाइल्स। For example, all the mobiles operating system जैसे कि Android, iOS and multiple others. Okay, so इस सीरीज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्लटर जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट टूल किट है जिसको गूगल ने बनाया है, and it is basically based on C++ and which is used to develop application for multiple different platforms. It is also known as cross-platform application builder toolkit, which can develop app for iOS and Android. So let us jump into the video and get the knowledge of Flutter. So in this video, we'll getting to know about how to install Flutter and what is a basic structure of Flutter. And further this, we are going to learn Flutter with step-by-step techniques. And basically, we are going to keep one approach, which is learning through the projects. So let's start the video and watch it till the end. So let's start. So first of all, if you want to download the Flutter, you just have to go to the flutter.dev, and here you can see the basic website of the Flutter, and you just have to click on Get Started. And here you can select the platform, whichever operating system you are using. You can just download the Windows from there. So अभी मैं Windows use कर रहा हूँ, तो मैं Windows वाला Flutter download करूँगा. And I have downloaded before only, so you just have to click over here and here you can get the multiple versions of Flutter. So this will like generate a Flutter file or a zip file which you have to keep inside the C folder. And the second thing you just need, other than downloading Flutter, is the IDLE or a text IDLE, in which you can edit the code and build the application. There are two different type of IDLE जहाँ पे अपना आप कोड लिख सकते हो, जो कि है Android Studio and VS Code. तो currently अपन VS Code use करने वाले हैं. If you want, you can also use Android Studio. So let's jump into the Flutter and know how and know how the Flutter looks like and how the basic Flutter projects look like. So this is my VS Code window, and here you can see my mobile screen app. And from here, we can just build a Flutter app by just pressing Control Shift P. After that, you can see a Flutter new project, which will ask what you want to create. We want to create an application inside the folder, whichever you want, and name the folder basic, and just press enter. This will download the basic Flutter template, जिसकी वजह से और जिसकी मदद से you can learn some basic things about the Flutter. Okay, so let us wait जब तक ये बन रहा है. तो आप देख सकते हैं द फ्लटर प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड. यहाँ पे जितने सारे फोल्डर्स हैं वो सब डाउनलोड हो चुके हैं. आपको हमेशा एक कमांड रन करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ये बेसिक
जो भी टैम्पलेट है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और इसी को अपन एडिट करेंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द फोल्डर्स जो जो फ्लटर के बेसिक टैम्पलेट में कंटेन करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ बेसिक टैम्पलेट्स लुक लाइक, जहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हैं एंड धीरे धीरे देखते हैं कि हर फोल्डर का क्या काम होता है। सबसे पहले डार्ट टूल फोल्डर कंसिस्ट ऑफ ऑल द डार्ट कोडिंग कंपाइलर्स, क्योंकि फ्लटर एक लैंग्वेज है जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड होती है। तो इफ यू वांट टू मेक फ्लटर ऐप यू शुड नो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एंड देन यू हैव एंड्रॉयड फोल्डर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है जिससे अपन एंड्रॉयड और आईओएस के ऐप बना सकते हैं। तो इनसाइड एंड्रॉयड फोल्डर यू कैन गेट द कंपाइलर ऑफ एंड्रॉयड विच इज बेसिकली कॉटलिन। यहाँ पे आपको कॉटलिन के कंपाइलर्स और बेसिक कॉटलिन की चीजें मिलेंगी, जहाँ से आपको अपने ऐप को नेटिवली आप एंड्रॉयड के लिए कंपाइल कर सकते हैं। Next to that, we have a iOS folder. Similarly, iOS consists the basic file of Swift, क्योंकि Swift iOS की एक native language है जिसकी मदद से अपन iOS के लिए ऐप कंपाइल कर सकते हैं। अब इन दोनों फोल्डर्स में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर ऐप ऐप कंसिस्ट करता है बेसिक ऐप की डिटेल, जैसे कि ऐप का टाइटल क्या होने वाला है, ऐप का आइकन क्या होने वाला है। उसके बाद होता है एसआरसी। एसआरसी कंटेन्स द मीडिया फाइल ऑफ द ऐप and all the permission given, and Gradle is the UI toolkit for the Kotlin जिसकी मदद से UI render होती है। Okay, and this is what Android folder is. After that we have a lib folder. लिब फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे अपन बेसिकली फ्लटर की पूरी कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे भी जो बेसिक टेम्पलेट कोड है वो भी लिब फोल्डर के अंदर लिखा है और फ्लटर के हर स्क्रीन या हर कोड डॉट डार्ट से एंड होता है, वो एक एक्सटेंशन है क्योंकि फ्लटर डार्ट पे बेस्ड है। आफ्टर दैट सिमिलरली वी हैव लिनक्स कंपाइलर जो कि लिनक्स के एप्लीकेशंस पे बेस्ड होता है और उनको कंपाइल करने में मदद करता है। उसके बाद वी हैव अ मैकओएस कंपाइलर। टेस्ट एक फोल्डर है जहाँ पे वी हैव टू राइट द टेस्ट की अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो किस कंडीशन में फेल होता है और उस कंडीशन में मुझे क्या यूजर को आउटपुट दिखाना है। And then we have a web compiler, and basically Flutter is a cross-platform application development tool जहाँ पे आप वेब के लिए भी वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो this is what a web compiler is, and after that you have a Windows. So basically from Flutter you can see through the file structure, you can create application for all the platforms cause it consists of many different compilers जो कि है Android, iOS, मैक ओएस, लिनक्स, वेब, इन सबके कंपाइलर है। तो इसकी मदद से अपन सबके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज pub.yml. इट इज अ बेसिक और द बेसिक डिटेल्स ऑफ द फ्लटर ऐप, जहाँ पे इस ऐप के बारे में मल्टीपल चीजें रहती हैं, जहाँ पे यू कैन डाउनलोड all the external packages from the from the outside. So let me tell you how you can do that. So for that you just have to go into your browser, and inside a browser you just have to type flutter pubdev, and you can check here the list of multiple packages you can install in your computer. And the way you can install is you just have to type the name of the package. I'll be telling you कितने सारे package होते हैं, सबको use करना सिखाएंगे, but this is how you can install the package in the Flutter. Just copy the command and go to your VS Code, go to your terminal and just paste the command. You can see this package will automatically download in your Flutter project and it will be added here. So this is how you can download the package. And if you also want to use some media in your app, जैसे कि image, music and videos, you can also define over here. Okay, so this is what a Flutter basic projects look like. So let us see how the Flutter application works and how लेट्स गेट द टेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन की कैसी एप्लीकेशन अपन फ्लटर कोडिंग लैंग्वेज से बना सकते हैं। तो फॉर दैट लेट मी शो यू माय मोबाइल स्क्रीन and try to run the basic code which is given by the thing,
and see the application. So for the first time, it will take some time to render the whole code, but you'll be like very enjoying while learning this course. So till the time ये जब तक बन रहा है, please make sure you like and subscribe the channel and hit the bell icon. And if you are confused anywhere, just ping me in the comment. I'm there to clear your all doubts. So let's wait till then. Let me explain you some more things about this code. So this code consists of a main function. Basically, I told you before also, Flutter language Dart पे based होती है और Dart is a kind of have a syntax similar to C++. So in C++, you also like you can see that you have a main function जहाँ पे पूरी application चलती है जिस पॉइंट से पूरी एप्लीकेशन रन करती है सो सिमिलरली फ्लटर में भी एक मेन फंक्शन होता है जहां से यू कैन सी कि पूरी एप्लीकेशन चल रही है आफ्टर दैट वी हैव अ स्टेटलेस विजेट फ्लटर कंसिस्ट ऑफ टू विजेट्स विच इज अ स्टेटलेस विजेट एंड अ स्टेटफुल विजेट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा व्हाट डज इट रिप्रेजेंट स्टेटलेस विजेट मतलब एक ऐसी विजेट जो अपनी स्टेट चेंज ना कर सके फॉर एग्जाम्पल अपने ऐप में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहते हैं और उसके बाद होते हैं स्टेटफुल विजेट ऐसी विजेट्स जिसमें यू कैन चेंज एंड विच कैन चेंज द स्टेट फॉर एग्जांपल कलर बदलना साइज बदलना these types of screens or widgets are coming under stateful widgets. Okay, so here you can see that I made one screen which is my app which is basically स्टेटलेस विजेट मतलब यहाँ पे कुछ स्टेट चेंज नहीं होने वाली उसके अंदर वी हैव यूज्ड अ मटेरियल ऐप यूजिंग मटेरियल ऐप वी कैन डिफाइन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऐप लेट्स रिमूव दिस कमेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक टाइटल दिया है मैंने अपने फ्लटर ऐप को फिर उसके बाद मैंने उसकी थीम्स को डिफाइन किया है फिर उसके बाद मैंने बताया है कि जैसे ही ऐप चालू होगा तो कौन सी स्क्रीन में नेविगेट करना है. So then we have made one more screen, which is a homepage screen, which is basically a stateful widget. Means ये अपनी state change कर सकता है. So here we have defined multiple things. For example, the counter variable and a function which increases the counter variable on tap. After that, we have a scaffold widget which refers to the screen and the design of screen. Okay, so here I think our app is built and let me show you how it works. Whenever you click on this plus icon, the counter of the app just increases 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's all the things you can see in your screen. So ये कैसे चल रहा है? Let me explain you. यहाँ पे we have defined one counter which is initially 0 और ये एक फंक्शन बनाया गया है जहाँ पे जब भी ये कॉल होगा तो ये काउंटर की वैल्यू इस वाले को 1 से इंक्रीज कर देगा. So यही तरीका फॉलो हो रहा है एंड देयर इज अ ऐप बार ऑल्सो ऐप बार इज द काइंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द ऐप यू कैन सी in the mobile app screen where it is written flutter demo homepage वो एक ऐप बार कहलाता है वो सब अपन आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे. After that we have like basically shown the text which consists of you how many times you push the button and after that the real counter and then we made a floating action button which on press calls this function. So summarizing all the code, you can see that this code creates an application where you can click on this button and increase the count. So that's all for the video. I hope you have like understood the everything. And if not, just stay connected with the videos cause this is just an introduction. And Flutter में बहुत सारी चीजें होने वाली है that will blow your mind. So thank you for watching and make sure you subscribe the channel and have a good day. Bye.